Assalamu alaikum students, how are you? I hope all of you fine and enjoying with good health. Today our topic is conversion of years into months and weeks into days. There are some time conversion, that is convert between different units of time. Suppose one day is equals to 24 hours. As you know that 24 hours is equals to one day, and there are 7 days in 1 week, so 1 week is equals to 7 days, and 1 year is equals to 12 months. अगर आपने ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करना है तो 1 year is equals to 12 months, और अगर ईयर चेंज इनटू वीक्स देन व्हेन 1 year is equals to 52 weeks, एंड 1 year is equals to 365 days. और अगर उस ईयर में लीप ईयर हो जाए, वो जैसे फरवरी में 28 की जगह 29 डेज होंगे, तो देन 1 year is equals to 366 days. Okay, there is a question, convert the year in 2 months. All of you know that 1 year is equals to 12 months. The question is 13 years 8 months. बेटा आपने ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आप देखें both have different unit. There is year and there is months. First you convert the year into months. All of you know that 1 year is equals to 12 months. So we multiply 13 by 12 months. 13 को हम 12 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे एज इन रफ वर्क. द आंसर इज 156 मंथ्स. इसमें अब आप 8 मंथ्स ऐड कर देंगे बिकॉज बोथ हैव सेम यूनिट्स. दैट मीन्स 156 मंथ्स प्लस 8 मंथ्स इज इक्वल्स टू 164 मंथ्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 ईयर्स. 8 ईयर्स को आपने मंथ्स में कन्वर्ट करना है. तो ईयर्स हैं, तो ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए 1 year इज इक्वल्स टू 12 मंथ्स, देन 8 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स. अब 12 का टेबल तो सबको आता है, तो 12 8s आर 96 मंथ्स. दैट्स मीन कि 8 ईयर्स में 96 मंथ्स होते हैं. ओके, नाउ देयर इज changing weeks into days. All of you know that 1 week is equals to 7 days. That's mean, how can you change the 5 weeks in days? That 5 weeks is equals to 5 multiplied by 7 days, because we know that 1 week is equals to 7 days. Then 5 sevens are 35 days. It means कि 5 weeks में 35 days होते हैं. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9 week 4 days. 9 को पहले हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे डेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो 9 sevens आर 63 days. फिर उसमें हम 4 days ऐड कर देंगे, तो 63 + 4 दैट इज 67. दैट मीन्स कि 9 week 4 days में टोटल 67 days होते हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच.